नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सचिव जनवानी चैनल पर आपको स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड लगेगा, हमारे चैनल का विस्तार होगा और मदद होगी। और वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरीज साथियों तक जाएगी। रिटायरीज के व्यूज़, इशूज़ और न्यूज़ पब्लिश और प्रोपोगेट होंगी। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएंगी और गवर्नमेंट एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी, गवर्नमेंट तक जाएगी। साथियों, मैंने एक मैसेज तमाम ग्रुप्स में और तमाम लोगों को भेजा है जो 1394 TP 1394 के रेस्पोंडेंट है। मैं भी हूँ उनमें, तो मैंने इनके लिए भेजा है। TP 1394 इन सुप्रीम कोर्ट ऑल रेस्पोंडेंट्स टू क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने कहा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो सबका, 165 लोगों का। फ्रॉम आर के त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक एग्रीड पेंशनर एक्टिविस्ट, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर। ये 22 नवंबर 24 को भेजा था। एन अपील एंड रिक्वेस्ट एज वेल ऑर्गेनाइज एंड यूनाइटेड collective decision and work. Respected friends, if all you like and appreciate the idea of having one platform for those fighting in courts for last many years, we all collectively form a group and add all respondents in TP 1394 in Supreme Court. Earlier there were 165 respondents, now on site it's 191. I don't know how and who more to it add. वैसे इसको इन्होंने कुछ को डबल कर दिया है। जो बाद में इंटरवेंशन एप्लीकेशन थी वो 165 में भी थी और बाद में भी ऐड कर दी। इस तरह से डबल हो गए कुछ, वैसे 165 ही मूल रूप से। Some of these are commercial banks and institutions etc. It's filed by IBA to transfer 14 petitions from various high courts to Supreme Court, while 3 other petitioners filed intervention application in Supreme Court and TP 1394. Total 17 high courts cases involved. Many of them filed counter affidavits in Supreme Court that it to be heard in Supreme Court and not in any one high court. 1 case, 15 cases हैं उसमें। बाबूराम कश्यप जी वाला डिसाइडेड बाय डबल बेंच, नैनीताल हाई कोर्ट। उत्तराखंड ओन ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन नोन एज ईस्ट सिंडिकेट बैंक वर्सेज बाबूराम कश्यप। ये था बाबूराम कश्यप वर्सेज ईस्ट सिंडिकेट बैंक था। नाउ चैलेंज्ड बाय कैनरा बैंक इन सुप्रीम कोर्ट, आल्सो रिलेट्स एंड अटैच्ड टू इट। In this case, there is 2 cases of various high courts, 14 plus 3 and 3 issues addressed, included as below. Number 1, pension calculation on issues allowance. Number 2, pension updation. Number 3, gratuity calculation as per ALC, DLC decisions, which now decided when Nainital High Court. Under OSR allowed. DA special allowance 26. Quotient calculation 26 days, 45 days gratuity per year after 30 years service completed. Our pensioners, one pensioners in this suit is retired in 2006 retiree of SBI subsidiary. I request all of you to form one group to pass information among us and to coordinate in the case related matters. I am also one of the respondents. It may help us fighting strongly with one idea of unitedness and which provided us by IBA and Supreme Court, putting on one platform TP 1394. We only to work on it. Moreover, members, active officers, advocates of Singla case, Nainital High Court case, respondents etc. may also be added as to unified actions fighting with IBA and government advocates as Attorney General and Additional Attorney General, Union of India and Union of India involved in TP 1394. That's it sir. Thanks and regards. राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर। तो एक तो हमने ये इसमें बताया था, रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सब एक ग्रुप बना लो,
लेकिन जो हमारे सीनियर साथी हैं वो इसमें कह रहे हैं कि फिर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो अपनी राय प्रकट करेंगे, इसलिए ये इसमें दिक्कत आ जाएगी, तो वो इसको उचित नहीं मान रहे। चलो कोई बात नहीं, जितना जब हो सकता है उतना उसी तरह से करना चाहिए, जब सबकी राय है तो उसी हिसाब से करना चाहिए। वो तो मेरे मन में एक बात थी और मैं चाहता था एक 165 सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए, और एक वो हालांकि एक उन्होंने ग्रुप बना भी रखा, मुझे भी ऐड कर रखा गया है उसमें अभी, कि भाई जिसमें सारे हैं, सभी पेटिशनर्स में से हर केस के एक एक दो हैं, और 23 मेंबर हैं उसमें, 23-24 हैं शायद। तो के काले एंड अदर्स जो के ग्रुप में 19 जो हैं उनमें कोई नहीं है, तो उन्होंने मुझे ऐड कर दिया। हालांकि तो मैं तो चाहता था कालिया जी और राजेंद्र और दूसरे एक दो लोग हैं उनको भी कर लें ऐड, लेकिन चलो। अच्छा आगे आपको ये बता दूं मैं कि चंडीगढ़ में NDOH's 4 December 24 contempt petition, NDH is 3/12/24. Mr. MC Singla case listed on 20 January 25, मे भी 20 डेट, जो अभी वो कंप्यूटर में आ रही है डेट। अब अभी क्या पता लग रहा है कि वो डेट इसमें है या नहीं है। वही चीज़ है ना कि ये कह रहे हैं, डियर मेंबर्स, पेंशन कॉम्पिटिशन केस कम अप फॉर हियरिंग बिफोर the DB today. The IBA lawyers prayed before the division bench that they may be implemented as party in the case, as all the settlements, joint notes, etc. are negotiated and signed by them on behalf of the banks. Our lawyers vehemently opposed their plea, stating that they are a private party, whereas the pension scheme was introduced, implemented in banks by government in prior consultation with RBI only. Hence, the court agreed and did not allow them to be implemented as a party. Thereafter, banks lawyers pleaded that in view of Supreme Court having granted interim stay in case of appeal filed by LIC, their CM filed in High Court for vacating stay should also be allowed. Our lawyer argued that Supreme Court has granted only interim stay in case of LIC and not in case of all banks. Therefore, the stay should not be vacated. However, the bench have directed to all the petitioners' lawyers to file their replies to CMs filed by banks for vacation of stay within a week's time, so that arguments on that can be also be heard. However, the bank's lawyers also requested for 1 week's time to argue their cases after receiving replies from petitioners. The Honorable Court, after hearing arguments of both sides, adjourned the case for final arguments on 4th December 24. The full details will be